Hello and welcome to Millions by Jupiter. My name is Deepansha and today we are going to discuss the reasons your credit card or loan might be like an Instagram DM from so sweet boy 69. Rejected. Now banks might reject your application and say things like Cibil score, fixed obligations और जेब में मेदू वड़ा खाने के पैसे भी नहीं है तू उधार कैसे चुकाएगा? Well, we can help with two of those problems. First up, CIBIL score और credit score. Credit score एक नंबर है जिससे बैंक वाले पता लगाते हैं कि आप कितने भरोसे के लायक हैं. It helps show the bank that you are likely to pay the loan back. But what if you apply for a loan and you don't have a credit history? मतलब आपने कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, तो क्रेडिट हिस्ट्री होगी ही नहीं और आगे लोन भी नहीं मिलेंगे. So if this is the case, you have two options. Apply for a credit card from the bank where you have a salary account or apply for a secured credit card. A secured credit card is issued against a fixed deposit. ये सब विस्तार में समझने के लिए watch this video. Now that you have a credit history, know that Cibil is a very popular credit bureau that most banks use to check someone's credit score. There are other credit bureaus like Experian and Equifax which are also important but used less often in India. A credit score can range from 300 to 900 and it's mostly like a movie script. अगर मूवी को हिट होना है तो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, वरना आप कितने भी अच्छे एक्टर्स डाल दो, आइटम सॉन्ग्स डाल दो, फिल्म पैसे नहीं कमाएगी. If your credit score is between 300 to 599, then it's like the movie Student of the Year 2. It's just bad. No bank will come near you and getting a loan could be extremely difficult. If your credit score is between 600 to 749, then it's like the movie Bharat. The script isn't great, but lenders will consider other factors like salary, other loans, etc. क्योंकि सल्लू भाई है ना, थोड़े पैसे तो फिल्म कमा ही लेगी. If your credit score is 750 and above, then it's like the movie Gully Boy. आपका टाइम आ गया है. Your loan request is very likely to be approved and your application process is also faster. मतलब अब बैंक से पैसे लेके सीधे अवार्ड सीजन में इन्वेस्ट करो ना यार. To be honest, क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना एक और एक्स्ट्रा काम है. तो इसीलिए लेट मी ट्राई एंड सिंपली एक्सप्लेन कि ये लोग क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं. लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, देयर आर 3 मेजर क्रेडिट ब्यूरोज एंड ऑल ऑफ देम हैव अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच टू दिस कैलकुलेशन. साइड हेडिंग समझ लो बस, बाकी अंदर के मैटर में बस 19-20 का ही फर्क है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्रेडिट हिस्ट्री. This counts for 30% of your score. This is a monthly record of the last 3 years. यहाँ आपके EMI, कार लोन, होम लोन वगैरह वगैरह के पेमेंट्स ट्रैक किए जाएंगे. अगर आपने अपने सारे पेमेंट्स टाइम पे किए हैं तो नो स्ट्रेस, लेकिन delays या defaults can really hurt your score. On a side note, if you pay the minimum amount due on your credit every month, it might not affect your credit score, but it's a very bad idea. और हाँ, these bureaus only track loans from the formal sector. तो इसमें कैंटीन वाले रमेश भैया की उधारी चुकाने से स्कोर नहीं बढ़ेगा. Next, credit utilization, which counts for 25%. Simply put, जितनी चादर उतने ही नहीं, उससे भी कम पैर. मान लो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है. अगर आप पूरा 1 लाख क्रेडिट यूज कर लोगे तो द बैंक सीज दैट एज अ नेगेटिव. क्योंकि अगर पूरी लिमिट यूज कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि ज्यादा ही स्ट्रेस में हो. अरे हर महीने लाखों का कर्जा कौन उठाता है? कितने ही एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद लोगे तुम? क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन, इसका भी 25%. पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन सब अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन होम लोन, कार लोन सब सिक्योर्ड होते हैं. Having a mix is better. Also, if you have a long-term loan which you have been paying on time, तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप ही अच्छा लगता है. नए लेंडर तुम्हारे कमिटमेंट और लॉयल्टी पे ही फिदा हो जाएंगे. एंड फाइनली, अदर फैक्टर्स which count for 20%. This is miscellaneous. जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है तो इट्स कॉल्ड अ हार्ड इंक्वायरी. और अगर बार-बार चेक करती है तो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ सकता है. तो चॉकलेट की तरह 17 क्रेडिट कार्ड लेने मत जाओ, because more credit means higher chances of defaulting. So lenders will see that as a problem. Finally, देख लेते हैं लोन एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाती है. To check your eligibility, the bank will check your salary, current loans and credit score. मतलब तीनों का मिश्रण सही होना चाहिए, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी. इस कैलकुलेशन को EMI to income ratio कहते हैं. This is popularly known by another term called FOIA, fixed obligation income ratio. Hence, proving once again that the finance world does not like simplicity. Now let's take an example to calculate FOIA. मान लो आपके फोन, कार, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर का EMI मिला के होते हैं 30,000 per month और आपकी सैलरी है 50,000. तो FOIA होगा sum of fixed obligations, मतलब टोटल उधारी divided by monthly income into 100. That is 30,000 divided by 50,000 into 100, which is 60%. So, because your fixed obligation to income ratio is higher than 50%, you are not eligible for more loans. What? My fixed obligation to income ratio is too high?
Yes, your fixed obligation to income ratio is too high. So if my fixed obligation to income ratio is too high, what can I do to fix my fixed obligation to income ratio? To fix your fixed obligation to income ratio, decrease your loans or increase your salary. अगर फिर भी loan जल्दी चाहिए, तो you stick to one of your working family members like a parasite and apply for a co-applicant loan. My credit score is lower than my 12th standard board exam. What should I do? Fixing your credit score is a simple but time-consuming process. अपने लोन्स टाइम पे किया करो, स्कोर अपने आप ठीक हो जाएगा. But like I said, you will have to keep going for 6 to 8 months to see a positive result. Apart from this, look out for errors in your Cibil report. You can get a free report once a year. Follow the link in the description to check it out. After you get the report, check your mistakes. दुनिया में ऐसा कोई पेपर वर्क नहीं बना है जिसमें गलतियां ना हो. Sometimes your information is just wrong. Sometimes default payments may be due to problems with the lender and not you. Check all your open accounts and make sure the ones you have closed are really closed. अपने Cibil report में अगर कोई debt settled या written off mark की गई है तो आपका स्कोर गिर सकता है. Make sure debts are marked as closed. Fixing your credit score is like losing weight. रोज मेहनत करनी है और 4 महीनों के बाद एक बार चॉकलेट ट्रफल केक खा लिया तो बस start from scratch. So don't miss your payments and just keep going. जाते जाते याद रखें कि even if you are desperate, don't apply for loans all over the place. This will trigger hard inquiries into your credit score और companies को लगेगा कि आप कर्जे के भूखे हैं. अलग ब्यूरो से अलग रिपोर्ट्स निकलते हैं. Because of the small differences in their calculation. Lenders will use what suits them best to justify whatever they want to do. So keep things like credit utilization in mind. एक credit card max out मत करो. Ask your bank to increase your limit or just get another credit card. वैसे भी सब पकड़ के बेचने की कोशिश तो कर ही रहे हैं. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to our channel for more such videos. Please comment below with what you want us to talk about on our next video. Until then, goodbye.